नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम हालात हाज़रा में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। नाज़रीन, हालात हाज़रा की एक और नशस्त और आज की नशस्त एक और कड़ी है G20 सीरीज़ जो हम कर रहे हैं उसके बारे में। हमारी जो पिछले दो एपिसोड्स हुए हैं G20 के बारे में, पहले एपिसोड में हमने ज़रा खुलासा किया था, एक जेनरिक सेंस में एक ओवरऑल व्यू हमारे नाजरीन को देने की कोशिश की थी कि G20 क्या है, इंडिया की प्रेसिडेंसी को लेकर G20 में क्या अहम चीज़ें हो रही हैं और कैसा एक खाका आगे बढ़ रहा है G20 की प्रिपरेशंस का। हमने अपने दूसरी नशस्त में G20 और उसकी सब थीम इकॉनमी को भी डिस्कस किया था। आज इसी सीरीज़ का एक और पहलू है, आज G20 में हम साइंस 20 की बात करेंगे। G20 की एक सब थीम होती है जो साइंस 20 के नाम से जानी जाती है। इसमें जो 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन या इसके जो मेंबर अराकीन हैं उनमें से जो हैं साइंटिफिक थिंकर्स आ जाते हैं जो एक प्रायोरिटी या एक सब थीम को लेकर आपस में डिस्कशंस करते हैं। ये एक सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस होती हैं जिसको लेकर एक फ्रेमवर्क या पॉलिसी रिकमेंडेशंस वो तश्कील देते हैं जो वो फिर वो फॉर्मली G20 में सबमिट करते हैं, जो फिर एक्चुअल फॉर्मल G20 मीटिंग्स का हिस्सा होती हैं। हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन में जो आज के मेहमान हैं मैं उनका तारुफ करा दूं। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, सबसे पहले आपका वेलकम है प्रोग्राम में। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब के बारे में मैं बता दूं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, हमारी वादी जम्मू कश्मीर से हैं। CSIR जो कि एक नेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ी प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन है, उसके हवाले से काम करते हैं और उसमें बिलखुसूस नोडल साइंटिस्ट हैं जो भी उनके इनिशिएटिव्स जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सिलसिले में हैं। तो शाहिद साहब से बात करेंगे, इनकी साइंटिफिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि S20 आया क्या है, इसके नशेब फराज क्या हैं और कॉन्सिक्वेंसेस जानने की कोशिश करेंगे कि इससे इंडिया और फिर बिलखुसूस जम्मू कश्मीर को क्या फ़ायदा है। डॉक्टर साहब, बुनियादी सवाल सबसे पहले, S20 ये कोई इब्तदा से G20 की फहरिस्त में नहीं आया, एक कहें तो रिसेंट पास में एक एडिशन हुआ है। आप हमारे नाजरीन को इख्तिसार से बता दें कि S20 क्या है और उसकी ज़रूरत G20 में क्या है। शुक्रिया अख्तर साहब, आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस शो discussing G20 and its engagement group Science 20. As you said that Science 20 was not initially started in 1999 like other themes were there in G20. It came very late actually. It was incepted in this entire G20 process. We know that science is a universal thing. जी। दो जो साइंस की टाइमिंग, साइंस की प्रायोरिटीज़, साइंस को परस्यू करने का अप्रोच, इट मे डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन और प्लेस टू प्लेस। When we say कि ये डिफर करता है, so that way we have somehow not been able to capitalize globally at least, I'm saying, जो हम benefits otherwise साइंस से ले सकते थे। So having this Science 20 engagement group in the blanket umbrella G20 enables all the global powers, जो आज G20 में हम कहते हैं कि it constitutes of some 2/3 of the global population. Exactly. It constitutes to some 80% of the global trade GDP exactly. and some 75% of the global trade, right? Exactly. So that means बहुत बड़ा एक proportion दुनिया का planet का जो है G20 को, it's a conglomerate of a deliberate करने वाला इन चीज़ों पे। And science is one of the biggest of the what we call as a defining and deciding factors कि हम economies को कैसे grow करें, उनको कैसे हम harness करें। So that's why science was brought into this G20. क्योंकि जो हमारी global aspirations है, we have countries जहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो underutilized है, और वी हैव कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत सारी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं विच वुड बी देन ट्रांसलेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक म्यूचुअलिज्म के लिए। ठीक, सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली वी वांट टू हैव a broader exchange of the scientific discoveries. We very recently saw pandemic in Italy. अब देखिए चाइना से आया, फिर इटली में it wreaked havoc across the globe अगर देखा जाए तो। So had it not been science for people, तो अगर ये रीजन में ही कंसाइज रखेंगे, we will not allow it to sort of what we call as penetrate or translate to different parts of the world, I think we will not be able to benefit.
also. Exactly. That's actually the reason how science have actually brought into or come into fore under the G20 umbrella. जी डॉक्टर साहब, ये आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया हुआ है दैट वी आर लुकिंग एट म्यूचुअल बेनिफिट्स और शेयरिंग भी देख रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज की एंड जो हमारे G20 में 19 कंट्रीज़ या यूरोपियन यूनियन की भी नेशंस ले लें, वी सी दैट बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं अपनी साइंटिफिक नॉलेज के हवाले से बहुत नज़दीक हैं आपस में, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं कि जहाँ पे साइंटिफिक नॉलेज या उनका इस्तेमाल जो है जिसमें शेयरिंग बहुत ज़्यादा होनी है, जो उसको बेनिफिट करें। इस बैकड्रॉप में और इस चीज़ को ख़ास मद्देनज़र रखते हुए कि इस पर्टिकुलर G20 में इंडिया ने जो प्रायोरिटाइज थीम की है, आप उसके बारे में भी हमें बताएंगे। हमें आप ये बता दें, हाउ मच इज़ इंडिया गोइंग टू बेनिफिट आउट ऑफ इट? इस पर्टिकुलर थीम को लेकर इंडिया इस साइंटिफिक नॉलेज की शेयरिंग में कितना बेनिफिट होने वाला है इससे? Now the benefit to India is obvious. It's not only about benefiting a particular country, Right. or we. It is a global program. Okay. इसमें like you said, we have poorer countries जहाँ पे science translation इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, but then there are bigger partners in the globe, Right. जहाँ पे science discoveries बहुत ज़्यादा profound है और बहुत ही unique है, Okay. which would have otherwise been able to help humanity, humankind. और जो हमारे जो we are constrained with natural resources. We know that Right. there are problems everywhere in one form of a sort of a situation or the other form of situation. So having said that, I think India is poised and we are very cognizant and aware of the challenges that this planet is right now having. Right. And the scientific fraternity, which I believe is like India is having the presidency of G20 Right. Right now in 2023, and we are very cognizant and aware, and we are poised to actually lead this scientific mission across the globe. जहाँ पे हम जितनी भी इकोनॉमीज इसमें है, you know that in G20 there are some 19 countries and European Union, जितना भी इसमें हम म्यूचुअल एक्सचेंज इस साइंस की टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एकेडमिक्स से कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस। परफेक्ट। आपने एक पॉइंट यहाँ पे छेड़ा है, एक्चुअली वी वांटेड टू गो इनटू दैट पार्ट ऑफ डिस्कशन, बट लेटर सिंस आपने वो ब्रिंग अप किया है कि G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी है, कोई आई मीन ये एक ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम होती है एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर के लिए कि वो प्रेसिडेंसी ले रहा है। इस पे हम बिल्कुल बात करेंगे, व्हाट डज इट मीन फॉर S20, इंडिया बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ G20 एंड G20 हैपनिंग इन इंडिया। उससे पहले मैं ज़रा ये पूछ लूँ हमारे नाजरीन के लिए, सो दैट कॉन्टेक्स्ट पूरा हो जाए, कि एक ब्रॉडर और ओवर आर्चिंग थीम कह रहे हैं इस बार जो S20 की है वो डिसरप्टिव साइंस एंड इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। एक तो आप ज़रा इख्तिसार से आसान ज़ुबान में हमारे नाजरीन को समझाएं कि ये थीमेटिक एरिया व्हाट डज इट ट्रांसलेट इनटू, मतलब ये थीमेटिक एरिया में हम ये समझना चाहते हैं, आई मीन वी डोंट वांट टू गेट इनटू द साइंटिफिक डिटेल्स ऑफ दिस थिंग, हम ये समझना चाहते हैं दैट व्हाट इज इट दैट इंडिया ने इसको प्रायोरिटाइज कर, इसको क्यों व्हाई इज दिस अ प्रायोरिटी? The theme, as you said, is disruptive science for innovation and sustainable development. इसका पस मंजर ही जो है G20, that is also a disruption. Okay. That's a disruption in the geopolitics. Okay. It used to be G7. Now it's G20. And from G7, G20 was created. Right. And that was actually disruption of the modern geopolitics. Right. That's a perfect example actually. That's why what we are traditionally seeing in science, we want to disrupt that. Right. We want to breach the boundaries of the traditional, what we call as pursuit of the science. Okay. That is actually disruptive. That is actually what disruptive means here. Okay. We want to access to the technologies, we want to pursue technologies, we want to translate the technologies or scientific discoveries which have not been traditionally there with us. Okay. डॉक्टर साहब, अभी तो बड़ी जेनरिक डिस्कशन हो रही है S20 को लेकर, हम साइंस के बारे में ज़रा डीप डाइव करते हैं इस पे। इस वक्त इंडिया की प्रेसिडेंसी है, आप एक सीनियर साइंटिस्ट हैं, आपका शब रोज़ साइंस में चला जाता है, यू आर ऑल्सो एफिलिएटेड एंड एसोसिएटेड विद अ प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्री की है। what does G20 presidency for India and then S20 major, what does it mean for scientists like you जो across the country काम कर रहे हैं या बाकी शोबों में academic में करते हैं, what does it mean for them कि इंडिया की प्रेसिडेंसी आ रही है, how is it going to bolster their effort, या इसका कुछ और कोई फ्रेमवर्क है जो हमारे नाज़रीन को समझना चाहिए? Look, India is right now a country, a region which is looked upon as a benchmark in money technologies, Right. as a leader for money discoveries because of its civilizational and scientific prowess. Okay. Both. Right. We have not been very recent in our
approach and discoveries and the what we call as tangible outcomes that we have in science, it has been civilizational in through many centuries actually. Right. We see. So when we see India, it's a young nation, it's a young country. We have institutions, we have academia, we have technology institutions, which have actually given world many commendable discoveries. Okay. And when we look at from a point of view that we are presiding this G20 what we call as conglomerate this year, that means entire almost 2/3 of the world is converging here to see our discoveries and to share their discoveries with us. Right. So that way India is, as I said, poised to actually lead this entire pursuit. राइट डॉक्टर साहब, अगर मैं सही समझा हूँ, आपने जो कहा है कि ग्लोब की 2/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस मुल्क में आ रहे हैं. दे आल्सो वांट टू लुक एट द द साइंटिफिक परस्यूट जो इस कंट्री में हो रही है, और जिसमें नुमाया साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट आपकी तरह बहुत सारे हैं. तो बिकॉज इस पॉइंट को आगे लेते हुए मैं ये तो समझ पा रहा हूँ कि ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है. आप एज ए साइंटिस्ट जो आपने इतना काम किया है, टू आई मीन वो काम तो वैसे ही शोकेस होता है साइंस का, ये एक अच्छा पहलू है, बट अब आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आप ये शोकेस करने की कोशिश करें, एंड देन इट कैन ट्रांसेंड बाउंड्रीज. जो आपकी टेक्नोलॉजी, और इट कैन हैपन वाइस वर्सा. कोई बाकी 19 कंट्रीज़ में आप ही की तरह सीनियर साइंटिस्ट है, उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ है. लेकिन मैं इसको ज़रा एक अलग पहलू में समझना चाहता हूँ कि ये G20 अभी जो एंगेजमेंट्स होने वाली हैं सारी, ये तो चलेंगी 1 साल के लिए और एक पर्टिकुलर मीटिंग के लिए, समिट के लिए, बट व्हाट डज इट मीन लॉन्ग टर्म के लिए? क्या मतलब है आप जैसे साइंटिस्ट्स के लिए कि आपका काम जो है वो तो वैसे ही ट्रांसलेट करेगा, बिकॉज वो तो मैं समझ पाता हूँ कि आप एक ब्रेक थ्रू काम कर रहे हैं, बट व्हाट डज G20 गिव यू इससे और बाकी एकेडमी में क्या? I'll simplify this question. जी प्लीज. No, you said that the G20 means that the technology, the discoveries, or whatever things we share, the culture, it transcends regions, boundaries, Exactly. national boundaries, right? So, iska perfect example hai, I tell you, Israel is a smaller country if we see geographically, Right. as compared to any other country in the world. Right. But they have mastered agricultural technologies by virtue of their technology in artificial intelligence, blockchain and machine learning. Okay. We see so much of things happening from their place as regards the modern agriculture. Hybrid agriculture is called. We see they are now what we call into application of drones in agriculture. Okay. Agriculture is one basic and one of the most mainstay of the economies of each of the country. Exactly. You know, we agree to that. And if a country like Israel, who is not geographically as big as our country, Exactly. is able to influence us, is able to actually inspire us, that we actually adopt their technologies. This is Right. the basic thing of the G20. Right. And I tell you how, as you were asking, how it is going to influence or benefit the scientists from different parts of the country. I tell you, we have an agriculture university here Right. in Kashmir, or in Jammu, or elsewhere in the country. Now under one mission program, we are deputing our scientists to learn new techniques there. Okay. This exchange of scientific fraternity, academia, technologists, engineers is actually possible under the ambit of this G20. It allows you actually, right. when we share, when we discuss our discoveries with them, they find it useful. They approach us, and or they come to us directly to learn those things, Right. to adapt to those technologies. Right. Likewise, we also get opportunities to know the outer world. Exactly. So that is we showcase our own talent. Yes. Right. So we also, because you might have learned about people going and pursuing postdocs in different Western countries and European countries. Right. Why so? Because we do not have the facilities, we do not have the scientific infrastructure, we do not have the health infrastructure, and our doctors move there, they pursue postdocs, they learn modern techniques, Right. knowledge, and they come and they serve people better. Yes. Exactly. So I think डॉक्टर साहब सही पॉइंट पे ये नुकता आपने छेड़ा है, और ये डिस्कशन स्लोली कश्मीर की तरफ जा रहा है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो पार्ट की मैं चाह रहा था कि आपकी ओपिनियन या आपकी एक्सपर्ट टेक उस पर ले लें कि बिलखुसूस वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर में आप देखें आपकी नज़र होगी यहाँ के साइंटिफिक लैंडस्केप पे, तो
अगर इसकी लैंडस्केप पे नज़र रखते हुए G20 का पस मंज़र जानते हुए आपको क्या लगता है? एक ये तो हमें समझ आ गया दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी। एक बात जो हमें पूरे इसमें समझ आई, आई एम श्योर हमारे नाजरीन को भी ये समझ आ गया दैट इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर साइंटिफिक फ्रेटर्निटी। लेकिन आपको क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर में आपके जो कलीग्स हैं, जो अपकमिंग हमारे लड़के हैं जो इन द फील्ड ऑफ साइंस एक्सेल करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है, आपकी सजेशंस क्या होंगी उनके लिए कि आगे, बिकॉज इट्स गोइंग टू शेप द काइंड ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट और फॉर दैट मैटर द एनवायरनमेंट जिसमें साइंटिफिक काम हो, आपकी सजेशन क्या है उनके लिए कि आगे कैसे बढ़ा जाए? Look, the brain quality in Kashmir is phenomenal. Right. The youth, the knowledge, the skill that a person from Kashmir belongs have is unique. Right. And if we channelize, if we leverage that capacity of the ordinary Kashmiris in actually learning, in inculcating those techniques, those skills, that knowledge, I think we are going to benefit hugely. Because having I've been in this field of science for more than 1 decade. I've been engaging with people across different institutions of the country, and I have seen that there's no match for people who come from Kashmir Valley. Right. As far as the scientific acumen is considered, as far as the intellect is concerned, it's quite unique actually. There may be reasons for that. There may be reasons that we come from a part of the world which is very we have seen a lot of trouble. We have situations, climatic situations, we have geographical situations which may be tough, and maybe it's evolution of the sort of a thing that has happened to all of us, that we perform better under the conditions that we have. So having said that, I think the academia, the scientific fraternity, the medical or medicos, what we can say, can benefit largely from the Science 20, particularly Science 20 engagement group, because you know that we, under this theme or engagement group Science 20, we have sub themes. Okay. I would like to come to that. Yeah. Sir, उसी पे जाते हुए, लेकिन मैं ज़रा यहाँ पे एक पॉज करूँ और अपने नाज़रीन को बता दूँ कि डॉक्टर साहब जैसे फरमा रहे थे दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी। हमारा जो यूथ है, जो समटाइम्स कोशिश कर रहे होते हैं साइंस की फील्ड में कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वी नो देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि विद प्रेसिडेंसी और S20 में जो हो रहा है, इंडिया अपनी प्रायोरिटीज़ को ऊपर ला रहा है एट G20 लेवल। सो ये एक ऐसा मोड आप कह सकते हैं कि जिसमें इसको ये फील्ड को ना एक एम्प्लीफिकेशन मिलेगी, एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू पुश योर करियर्स इनटू दीज फील्ड्स। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए एक पॉइंट। डॉक्टर साहब वापस आते हुए हम इस जो हमने एक स्ट्रिंग बांधी है ये डिस्कशन में पॉइंट्स की, मैं रिवर्स में वापस एक जेनरिक सेंस में जानना चाहता हूँ। काइंडली टेक अस थ्रू कि ये S20 की प्रोसेस ये क्या होता है, ये एंगेजमेंट ग्रुप्स कौन होते हैं, ये आपने जो सब थीम्स कही ये क्या होती है, और ये पूरा ऑपरेशनलाइज कैसे होता है, प्लीज़। या हर एक एंगेजमेंट ग्रुप में G20 में वी हैव मल्टीपल एंगेजमेंट ग्रुप्स. वी हैव T20 लाइक थिंक टेक 20, we have B20 like business 20, we have W20, women 20, we have youth 20, right? We have civil, we have parliamentarian 20. Right. So likewise we have science 20, S20, and it's expected in the meetings of the engagement group under science, we will the people from the scientific domain will converge. Okay. They will converge at different places across the country in 5 meetings. The first meeting will be at Puducherry, inception meeting, where the delegates from all the G20 what we call as nations and the European Union will converge. They will actually take off with the proposals and the ideas and the things that have to be deliberated in next 3 meetings. Yes, next 3 meetings. One is to be held at Agartala, then Indore, and then Lakshadweep, right, Bangram, and finally then we'll be having a summit meeting at Coimbatore. Okay. So inception meeting will be an overall discussion of the entire thing that would be pursued during the presidency under the group. Yes, meetings में discussion क्या करनी है? Exactly. So then at Agartala we will be discussing on clean and greener energy. Okay. Because we understand that the globe is having tremendous requirement for
energy requirements, exactly. and more so with the poorer countries. And we have to have one holistic approach to address all those requirements of the country, considering the challenges planet has. We can't rely on fossil fuels for too long. Exactly. And we have to keep so many things while we actually address those challenges of the energy. Right. And one typical example is that our country has very recently launched National Hydrogen Mission. Okay. Right. So that is one of the biggest of the what we call as starting point for these discussions under this meeting. Then another theme that we would be pursuing is universal health. Okay. Right. And in that we'll be covering the entire process and pursuit, how human health, animal health will be ensured. Right. It will be involving discovery discussions. Right. It will be involving how we can build upon sharing and creating infrastructure for ensuring good health to the humankind. And then we will have another meeting connecting society, science with society and culture. Okay. So these will be the meetings that will be taken, and whatever will be emanating from all these meetings will be taken to summit meeting at Coimbatore. Then after that, the entire thing that what had been discussed throughout the year under the engagement group would be put before the G20 summit. In the form of policy recommendations. Yes, recommendations, exactly. तो डॉक्टर साहब एक और चीज़ जानना चाहेंगे, ऑल्दो मे बी ये अंडरस्टूड भी है, लेकिन आपसे भी समझना चाहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर डिस्कशंस आपने बोली, ये जो फहरिस्त है इतनी मीटिंग्स की, एंगेजमेंट्स की जो होंगी, इसमें इन सारी मेंबर कंट्रीज़ में से जो हैं डिफरेंट साइंस के शोबों से साइंटिस्ट जो हैं वो आएंगे एंड they'll deliberate on these particular and especially जो इंडिया में जो भी इस वक्त प्रायोरिटी एरियाज़ हैं उनके साइंटिस्ट्स वहाँ जा सकते हैं. देयर इज़ एवरी चांस कि इंडिया से मल्टीपल पीपल ज्वाइन कर सकते हैं. No, there is a procedure actually. In the inception meeting, it's expected that there will be 35 delegates from India and 35 delegates from rest of the G20 participating member countries and European Union. So in total there will be some 70 delegates, 70 odd delegates, besides some senior representatives from the Ministry of External Affairs and Science Ministry. Right. But in the theme meetings there will be only 25 delegates each from India, and rest of the 25 delegates will come from all other countries. But now it will get separated on the basis of expertise, and because in the climate there will niche, be more not only niche. Because when we talk of, for instance, clean and greener energy, it's expected that all those scientists and scientific people and scientific leaders will converge who actually are associated with that sort of a science theme. And then if we talk of health, it's expected that people from that domain will actually converge. Right. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. हम आपके साथ थ्रू आउट दिस डिस्कशन, ये जो सीरीज़ हमारी है, आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है S20 का. आपके साथ हमने कोशिश की है S20 को समझने की, आपसे कोशिश की है ये जानने की इसकी ब्रॉड कॉन्टोर्स क्या हैं, ये समझने की कोशिश की है कि इसकी जो है रेमिफिकेशंस या इसके जो इम्पैक्ट हैं वो क्या रहेंगे एट द नेशनल लेवल, और फिर ये भी समझने की कोशिश की है कि एक रीजनल या स्टेट या टेरिटरी लेवल पे क्या रहेंगी. आपके साथ हम जुड़े रहेंगे बिकॉज एज यू सेड ये एंगेजमेंट्स चलती रहेंगी थ्रू आउट द ईयर, और आपके साथ हर एंगेजमेंट या उन एंगेजमेंट्स के बाद जो डिस्कशंस हुए हैं आई एम श्योर वो मंजर आम पे आते रहेंगे, और आपके साथ उन डिस्कशंस पे जुड़े रहेंगे दैट हाउ डू वी सी दिस S20 नाउ शेपिंग. ये तो एक ब्रॉडर हमारी जेनेरिक डिस्कशन हुई है कि दिस इज़ व्हाट इज़, ये ऑब्जेक्टिव है इसका, ये होना है. फिर आगे क्या होगा आपके साथ, उसके साथ आप प्लीज़ आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़. Look, in near future we will be having 100 years of our independence. Right. 2047. Right. And we have still some years left to see how actually we can become, because science is, as I said, science is one way which can lead us to champion this globe. Right. In many facets. Right. And we have diversity, cultural diversity, we have
diversity in languages, we have diversity In in so cultures, many everything, right? everything. Right. And that gives us a leveraging sort of a position, how we could actually lead and champion the entire discourse under science I'm saying. आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू प्रोबेबली एंड दिस प्रोग्राम नाजरीन कि ये जो बचे हुए साल हैं इनमें जो भी हमारे एम्बिशंस या एस्पिरेशंस थी साइंस की वो मटेरियलाइज करने का टाइम कंट्री के पास है. विद दैट नोट हम अपने मेहमान डॉक्टर शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और नाजरीन आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी. जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं. खुदा हाफिज़.